ठीक है। अच्छा, एक एक चीज़ मैं और बताता चलूँ बिफोर आई स्टार्ट गोइंग इनटू दैट, कि आपकी जो ग्लोबल अर्निंग है, वो दोनों तरफ से टैक्स होती है। अगर आप कनाडा में भी हैं, तब भी आप ग्लोबल अर्निंग पे टैक्स देते हैं, और अगर हुँ, यूएस में, तब भी ग्लोबल अर्निंग में टैक्स देते हैं। बट वो एक्सरसाइज़ तब होती है जब आप 180 डेज़ रह रहे हो कहीं। अगर मैं यूएस में सिर्फ 2 महीने रहा हूँ, तो मेरी ग्लोबल इनकम पे मुझे टैक्स देना नहीं होगा। मुझे ग्लोबल इनकम पे कनाडा में टैक्स देना है उस साल। और अगर मैं 180 डेज़ से ज़्यादा रहा हूँ कनाडा में और यूएस में, व्हाटएवर इट इज़। सो जहाँ आप ज़्यादा रहे हैं 180 डेज़ से, हुँ, वहाँ जो है वो ग्लोबल इनकम जो है वो टैक्स हो रही होगी। अब आ जाते हैं, जो दूसरी स्टैंडर्ड जो लोगों के पास इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वो होती हैं अनरजिस्टर्ड अकाउंट्स में। तो मैं टीएफएस, आरआर, एसपी, आरईएसपी की अलग से बात करूँगा, बट अनरजिस्टर्ड अकाउंट्स वो हैं जो आप जिस पे प्रॉपर टैक्स लगता है, वो टैक्स ना डेफर्ड होता है, ना टैक्स फ्री होता है, और आपने नॉर्मल जो है वो इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं स्टॉक्स में। वो सारे स्टॉक्स जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई हैं, वो सारे हो जाते हैं डीम्ड डिस्पोज़िशन कहलाती है। सो फॉर इंस्टेंस आपने एक स्टॉक लिया $100 का, और मैंने मूव किया है जुलाई 1, 2022 को, और उस तारीख को उस स्टॉक की वैल्यू है 120। अब वो स्टॉक मैंने बेचा नहीं है, पर मुझे उस $20 के गेन पे टैक्स देना होगा कनाडा गवर्नमेंट को। अनरियलाइज़्ड गेन पे। अनरियलाइज़्ड गेन। सो वो गेन मैंने किया नहीं क्योंकि मैंने बेचा नहीं, बट वो कनाडा ये अज़्यूम करता है कि आप जा रहे हैं, हम ये अज़्यूम कर रहे हैं कि आपके सारे एसेट्स बिक गए, और सारे एसेट्स बिक गए हैं, तो ये जो एसेट बिके हैं, इस पे कैपिटल गेन हुआ है $20 का। इस $20 पे आपको हमको टैक्स देना है, और वो फिर आप अपना टैक्स वहाँ लायबिलिटी क्लोज़ करके आते हैं। यूएस में जो आपकी नई बेस है, अब उस स्टॉक की नई बेस 100 नहीं है, अब उस स्टॉक की नई बेस है 120, व्हिच इज़ गुड, क्योंकि अब आपको जो है वो आपने कनाडा में तो टैक्स दे दिया उसका, अब आपको यूएस में जो टैक्सेशन शुरू होगी, वो 100 से नहीं शुरू होगी, वो 120 से शुरू होगी। तो एंड देन द कैपिटल गेन विल स्टार्ट ऑन टॉप ऑफ द 120। तो उसके लिए आपको जो यूएस में आईआरएस है, उसको आपको कुछ इन्फॉर्म करना पड़ता है कि भाई ये मैं जो स्टॉक्स है मैं लेके आ रहा हूँ अपने साथ, और इसकी क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पे जो है कैपिटल गेन टैक्स पे कर चुका हूँ कनाडा में, तो अब जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ से है 120 से, तो इसके लिए आईआरएस को कैसे पता चलता है? सो नॉट एट द टाइम ऑफ मूविंग। आपने एट द टाइम ऑफ मूविंग तो आपने सिर्फ कनाडा को सेटल किया है। अच्छा। और वो भी एट द टाइम ऑफ मूविंग नहीं किया, बाय द वे, यू जस्ट डिड दैट मैथ फॉर योरसेल्फ। आप करेंगे, हुँ, जब आप जुलाई 1 को आ रहे हो, तो आप बैठ के वो मैथ कर लें, अपनी एक एक्सेल टेबल बना लें कि ये मेरे स्टॉक्स थे, ये उसकी वैल्यू थी, इतना कैपिटल गेन है। हुँ, जब टैक्स सबमिट करने का टाइम आएगा अगले साल, तब आपने दोनों को इन्फॉर्म करना है। और इन्फॉर्म से मुराद ओके। ये कि इट्स जस्ट लाइक यू विल शो कैपिटल गेन, हेल्प, दैट्स इट। आप अपने अकाउंट उस पे सबमिशन पे लिखेंगे कि दिस इज़ द ईयर आई एम मूविंग आउट, और फिर आप जो है वो अपनी जो फॉर्म फिल करेंगे, उसमें आप लिखेंगे ये स्टॉक्स मैंने बेच दिए। हालाँकि बिके नहीं है, बट आप लिखेंगे बेच हाँ, दिए, उस पे जो कैपिटल गेन टैक्स है, वो जो ल कैलकुलेशन होगी उसकी होगी। इसी तरह आईआरएस के लिए भी, अब तो जो नई बेस है वो तब आप रियलाइज़ करेंगे जब आप उस स्टॉक को बेचेंगे। सो लेट्स से दैट स्टॉक इज़ फॉर 120, बाय द एंड ऑफ द ईयर और बिफोर द ईयर एंड्स आई सेल इट फॉर 130। तो वो $10 का जो गेन है, क्योंकि अब बेस 120 हो गई, वो मैं अपने उस पे रिपोर्ट करूँगा आईआरएस को, सिर्फ़ वही, उसी स्टॉक को। बाकी स्टॉक जो नहीं बेचे, वो नहीं बेचे, और उस पे मैं दिखाऊँगा कि बेस इसकी 120 है। इसमें कोई प्रूफ नहीं देना होता, अनलेस और अंटिल दे वांट इट। तो अगर उनको हुँ, शक हुआ कि आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो बोलेंगे ये बताएँ, ये 120 कैसे है? ये तो नहीं होना चाहिए था 120 और व्हाटएवर। एंड देन यू विल सेंड देम द प्रूफ सेइंग कि मैं जुलाई 1 को मूव किया था, हियर आर द स्क्रीनशॉट्स, कि वो जुलाई 1 को उसकी वैल्यू इतनी थी 120, एंड दैट्स व्हाई आई यूज़ 120 एज़ द बेस प्राइस। ठीक है। Are you a non-US tax resident and looking to open a business in the US? Well, this video is very important for you, so watch it till the end. Basically, if you are a non-US tax resident, which means you don't have SSN, which is your tax identification number, which means when you open a bank account or you open a Stripe account or PayPal account or Amazon business account or any business account, you need your SSN number in order to open any of these accounts in the US. While if you are a non-US tax resident, which means you don't have SSN with you, you can have another identification which is called ITIN. So ITIN is similar 9-digit number which is used for tax purposes if you are a non-US tax resident. So whenever you apply for a business account or bank account or payment processing account like PayPal or Stripe or even Amazon FBA seller, or registering a business in the US, you can use ITIN instead of SSN. This will help you to set up all of these things even though you're not a US tax resident. So if you're in Canada, Latin America,
Europe, UK, Australia, or anywhere in the world, you can apply for ITIN, and you can use ITIN to register a business, open up the business accounts, open up the payment processing account in the US, and pretty much do all the tax related stuff using ITIN even though you don't have SSN. One of the unique use case for ITIN is if you are a non-tax resident but you have a US based income. Like, for example, you have a rental property in the US or any other business that is generating income from the US, then depending upon the tax treaty from your parent country, you may have to file taxes in the US, right? So when you have to file taxes in the US, you need ITIN because you have to file your tax return on a Form 1040-NR. Okay, so if you are a non-tax resident, you need the Form 1040-NR in order to file your tax return, and when you fill out that form, you will be required to enter your ITIN because you don't have SSN. So in order to enter your tax identification number, you have to have ITIN number ready. Okay, this is a very common use case for all the non-tax resident that is generating income in the US. They need to file tax return. Depending upon your tax treaty between your parent country, you may need ITIN as well. So how do you get that? Well, there are some companies available on the internet that will help you to get you the ITIN, but they may charge between $400 to $600 per application. We have a company called ITIN, and they are one of the quickest in terms of submitting the application. So they will help you out in terms of collecting the documentation, help you out in terms of answering your questions, and help you out in terms of submitting the application. Now, the typical application process times takes between 4 to 14 weeks, but the ITIN people only take 48 hours to collect the information, help you out in the journey, submit your application, and from that point onwards, it's basically IRS. IRS can take between 2 to 12 weeks depending upon their volume of the applications, but throughout the process, they will handhold you in terms of opening up the accounts, help you to open up the FBA account or Stripe account or PayPal account, or guide you in terms of the entire process. They're pretty quick to respond. They have people speaking English and Spanish and Arabic, and they can give you very competitive rates as well. Plus, if you use my referral link, which will give you extra $50 discount when you purchase their services. So if you are looking to open a business in the US, start your journey today, apply for ITIN. Even though if you're not looking to open a business now, you should have ITIN just in case in the future, if you want to open a business, you're ready from tax standpoint. So check the link in the description below, and let's get back to the video.